છોટાઉદેપુરમાં 137 લોકોએ આપ્યું જીવનદાન। વિશ્વ આદિવાસી દિને ઓરસંગ હોસ્પિટલના ભવ્ય રક્તદાન શિબિર છોટાઉદેપુર। વિશ્વ આદિવાસી દિન નિમિત્તે છોટાઉદેપુરની ઓરસંગ હોસ્પિટલ ખાતે માનવ સેવાનું પ્રેરણાદાયી કાર્ય જોવા મળ્યું। સર્વોદય પ્રગતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને ઓરસંગ હોસ્પિટલના સંયુક્ત ઉપક્રમે 8 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ રક્તદાન શિબિર યોજાઈ હતી। એક યુનિટ રક્ત કોઈની આખી જિંદગી બચાવી શકે છે અને રક્તદાન એ મહાદાન છે ના સંદેશ સાથે યોજાયેલી શિબિરમાં 137 વ્યક્તિઓએ ઉત્સાહપૂર્વક રક્તદાન કર્યું। ઓરસંગ હોસ્પિટલના ડોક્ટર जितेन्द्र राठवा सहित राजेश कुमार राठवा, विराग भाई राठवा, धर्मेश भाई राठवा, गणेश भाई राठवा, रसिक भाई राठवा, महेश भाई राठवा सहित आयोजकों और मोटी संख्या में सेवाभावी लोग उपस्थित रहा था। छोटाउदेपुर जिला में तात्कालिक रक्तनी जरूरियात ऊभी थाय त्यारे अगाऊ बोडेली अथवा वडोदरा सुधी जवुं पड़तुं हतुं। लांबू अंतर और समयना कारणे दर्दीओना परिवारजनोने मुश्केलीनो सामनो करवो पड़तो हतो। हवे छोटाउदेपुर खाते शरू थयेला ब्लड स्टोरेजथी प्रसूति, सिकल सेल एनीमिया और अकस्मात जेवा कटोकटीना केसोमां समयसर रक्त उपलब्ध थवामां मोटी राहत मळशे तेम ओरसंग होस्पिटलना ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जितेन्द्र राठवाए जणाव्युं हतुं। संपादन नटवरभाई परमार, छोटाउदेपुर प्रकोप न्यूज, सत्यनी साथे जनतानी वात। जो तमने प्रकोप न्यूज़ना आवा सचोट और झड़पी समाचार गमता होय तो चेनल ने लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाववानुं भूलता नहीं।